Guys, welcome back to Trendy Girl की जी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा, simple और budget-friendly DIY wooden key holder, जो आपके घर के entrance को instantly stylish और organized बना देगा। अगर आप B1 login में से हैं जो Roz keys दंते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए perfect है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं required materials की। आपको चाहिए होगा एक wooden piece या छोटी सी wooden board, कुछ hooks या nails, acrylic paint या spray paint, paintbrush, strong glue या drill machine, और थोड़ी सी creativity। आप ये सब चीजें easily अपने घर में या local market से ले सकते हैं। अब start करते हैं अपना DIY project। Step 1, सबसे पहले अपनी wooden board को clean कर लें। अगर surface rough हो तो हल्का सा sandpaper use करके smooth बना लें। ये step बहुत important है क्योंकि smooth surface पर paint ज़्यादा अच्छी finishing देता है। Step 2, अब अपनी favorite color choose करें। अगर आप aesthetic look चाहती हैं तो pastel shades जैसे white beige या light pink use करें। और अगर bold look चाहिए तो dark colors जैसे black या navy blue भी use कर सकती हैं। अब paint brush की मदद से evenly paint apply करें। एक coat के बाद उसे dry होने दें, फिर second coat लगाएं for perfect finish। Step 3, अब टाइम है थोड़ी डेकोरेशन का। आप इस पर stencils यूज कर सकती हैं या cute quotes लिख सकती हैं जैसे home sweet home या welcome। अगर आप और trendy look चाहती हैं तो artificial leaves, mini flowers या jute rope को भी यूज कर सकती हैं। Step 4, अब hooks लगाने का टाइम है। आप अपनी requirement के हिसाब से 3 से 5 hooks लगा सकती हैं। Ensure करें कि hooks properly tight हों ताकि keys easily hang हो सकें। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज कर सकती हैं, लेकिन इंश्योर करें कि वो हैवी ड्यूटी हो। स्टेप 5, अब बैक साइड पर हैंगिंग सपोर्ट लगाएं। आप एक स्ट्रॉन्ग हुक या रोप अटैच कर सकती हैं ताकि आप इसे वॉल पर इजीली हैंग कर सकें। और बस आपका ब्यूटीफुल DIY वुडन की होल्डर रेडी है। अब इसे अपनी एंट्रेंस वॉल पर लगाएं और देखें कैसे ये छोटी सी चीज आपके घर का लुक कंप्लीटली चेंज कर देती है। ये सिर्फ एक की होल्डर नहीं बल्कि एक स्टाइलिश डेकोर पीस भी है जो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। प्रो टिप, आप इस डिजाइन को कस्टमाइज भी कर सकती हैं, जैसे फैमिली नेम ऐड करना या डिफरेंट शेप्स ट्राई करना, लाइक हाउस शेप या हार्ट शेप। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल ट्रेंडी गर्ल की जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें फॉर मोर अमेजिंग डेकोर आइडियाज। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।